In a shocking development, shocking reversal of fortunes, Vinesh Fogart was disqualified from the Olympics after being found overweight ahead of her women's 50 kg final, leaving her medalless within hours of coming close to an unparalleled goal. Vinesh had scripted history by becoming the first Indian woman wrestler to reach the gold medal bout in the event on Tuesday night. Before this morning, she was assured of at least a silver medal, but will now be coming back empty-handed due to the disqualification. The Indian Olympic Association confirmed the development and requested privacy for the wrestler, who was competing in her third Olympics. Olympic medalist Vijender Singh has hinted at a conspiracy behind the disqualification. Here's what he told us. विजेंदर जी, जीतने के बाद भी आज विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई होके हार जाएगी। जी, आई थिंक ये बहुत बड़ा एक सदमा है पूरे हिंदुस्तान के लिए, मेरे लिए। और कहते कि हम इसको लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। इतना दर्द है, इतनी पीड़ा है, इतना गुस्सा है। और आई थिंक मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है इसके पीछे हिंदुस्तान के अगेंस्ट। तो जो भी इसमें इन्वॉल्व है, मैं बिकॉज एज ए स्पोर्ट्स पर्सन आई नो दैट सुबह वेट होता है। रेसलर का मुझे नहीं मालूम, रेसलर का शायद एक बार वेट होता है, उसके बाद दोबारा वेट नहीं होता। अगर ओवर वेट है तो उसको टाइम दिया जाता है 1 घंटे का, 2 घंटे का, कि आप जाओ इसको कम करो, उसके बाद दोबारा वेट करो। एंड शी इज वेरी प्रोफेशनल, शी नो दैट कि how to control the weight, she know that. So I don't think so कि ये बहुत बड़ी एक षड्यंत्र है इसके पीछे, जो मैं मानता हूँ। ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात की कि 1 घंटे का टाइम यूजुअली दिया जाता है वेट घटाने के लिए, और मेरली 100 ग्राम 100 ग्राम का ही बस फर्क पड़ा था, ओवर वेट थी। आपने जो बोली ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि कोई साजिश हो सकती है इसके पीछे। जी बिल्कुल बिल्कुल, व्हाई नॉट, बिकॉज हमारी लड़की जो दुनिया की सबसे बेस्ट रेसलर है, उनको बीट करके कहते फाइनल में पहुंची है, तो कई लोगों की बात हजम नहीं हो रही। दे आर नॉट हैप्पी कि लाइक विनेश फोगाट जीते, और लेकिन उसने प्रूव किया कि लाइक शी द चैंपियन। और अभी इस तरह की उसके साथ साजिश होगी तो फिर तो कहते कि राम भरोसे है जी। फिर तो आप किसके तरफ आप इशारा कर रहे हैं, किसने की साजिश? आई हैव नो आइडिया। इतना मेरे अंदर वो होती, मेरे पास सोर्सेज होते तो मैं उसका नाम भी बता देता, बट देयर इज अ बिग कॉन्स्पिरेसी बिहाइंड दैट, दैट्स व्हाट आई थिंक। And have you spoken to Vinesh Fogart? उसका mentally, how does an athlete, how does a sports person deal with a stressful situation like that, जो जीतने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि वो लास्ट स्टैंडिंग होगी उनकी ओलंपिक्स में? जी बहुत दुख होता है और बहुत तकलीफ होती है, बिकॉज ओलंपिक 4 साल के बाद आता है, और आई थिंक उसका तो लास्ट ओलंपिक था बिकॉज सी 29, बट उसने इस तरह की कहते कि ओवर वेट 100 ग्राम 10, तो आई थिंक उसको टाइम मिलना चाहिए था 1 घंटा 1.5 घंटा, इसको कम करो। और बहुत उसके पास एक्सपीरियंस बहुत है, मैं नहीं मानता कि वो ऐसी गलती करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप जरा ये एक्सप्लेन कीजिए। आप जो बोले थे ये एक्सपीरियंस है, उनके पास एक एक्सपीरियंस टीम भी है जो मिनट बाय मिनट ये सब चीजें मॉनिटर भी करती है, वेट, उनका खाना, उनका पीना, सब कुछ मॉनिटर करने के बाद क्या होता है पूरा प्रोसेस, जरा हमें समझा सकते हैं अगर विजेंदर जी? जी आपका देखिए, आपके अगर फाइट जीत जाते हैं तो आपको नेक्स्ट डे आपको मालूम आपकी फाइट है, तो आपका सबसे पहले वेट चेक होता है। वेट सबसे बड़ा मसला होता है एथलीट्स के लिए, वेट को कंट्रोल करना। और हम लोग 5-5, 6-6 किलो एक रात में कम कर सकते हैं। वी नो दैट, वी नो द टेक्निक, वी नो, हम गए इन सिचुएशन से। अच्छा। लेकिन 100 ग्राम वी कैन इजीली, लाइक हम 5-5, 6-6 किलो वेट कम कर सकते हैं, तो 100 ग्राम तो कुछ भी नहीं, 1 घंटे बाद हम कहते हैं कि दोबारा कम कर सकते हैं, बट उसको चांस मिलना चाहिए था। बट सडनली इतना हार्श और हार्ड डिसीजन जो इसने लिया है कि इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, तो ये मेरी समझ से बाहर। आई डोंट नो इसका मैं क्या बताऊं, तभी मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी साजिश है हिंदुस्तान के खिलाफ, और कहते हैं कि इसका सरकार इसके ऊपर गंभीरता से विचार करे। मगर अभी कुछ इस पॉइंट पे सरकार कुछ कर सकती है क्या? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कुछ कर सकती है क्या? ऑलरेडी डिस्क्वालिफिकेशन हो चुका है। जी प्रोटेस्ट कर सकती है, और उसमें जो भी उसका ऑब्जेक्शन है, उसके जो इश्यूज हैं वो उठा सकती है, लेकिन उसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग लीडर की जरूरत पड़ती है, एक स्ट्रॉन्ग जो इसको बात कर सके, जो केपेबल हो उनसे बात करने के लिए, और एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले, वहां खड़ा हो गया लाइक दिस इज रॉन्ग, यू कांट डू इट। यस, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि जो स्पोर्ट्समैन होता है ओवरनाइट 5-5 केजी भी कम कर सकते हैं।
जी। ऐसा आपने कभी इंस्टेंस देखा है जहां पर सिर्फ 100 ग्राम के लिए किसी का डिस्क्वालिफिकेशन हो, और वो भी गोल्ड के बाउट पे, फाइनल्स के बाउट में ओलंपिक्स? नेवर एवर। आई थिंक मैं तभी तो कर रहा हूँ, मेरी सबसे बड़ी, मेरे को अंदर तो इतना गुस्सा है कि पूछिए मत, कि आई कांट एक्सप्लेन माय एंगर इन वर्ड्स। मैं तो मैं क्या बताऊं, बिकॉज़ हमारे भिवानी की लड़की है और बहुत दुख होता है, तकलीफ होती है। और इस टाइम में अभी करना क्या चाहिए, किसको क्या करना चाहिए, किस अथॉरिटी को स्टेप अप करना चाहिए? प्रेशर जी, ऑफ कोर्स अथॉरिटीज को, हिंदुस्तान की सरकार को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। हमारी लड़की का ओलंपिक मेडल है और ये खाली नहीं जाना चाहिए। दैट्स इट। So while you're getting all these reactions, Vijender Singh says that he is angry. There are others who are calling it a conspiracy. These are fresh images of Vinesh Fogart, and this is after she was disqualified. Looks extremely heartbroken and shattered, and one would be after reaching the stage that she reached, after becoming the first female wrestler to have reached the finals. She was disqualified because she was just 100 grams overweight, but then those are the rules. These are images coming in of Vinesh Fogart after she was disqualified. We'll try and connect with our reporters to get you more details, but latest pictures there describe her state of mind at the moment. There are multiple reactions coming in from all quarters of life, in fact. We have Arunil getting us more details. Arunil, everybody expressing their anger, some calling it a conspiracy, but amidst all these latest pictures of Vinesh Fogart speak a lot about the state that she is in, completely shattered and devastated. Well, certainly, yes, very heart-wrenching for Vinesh Fogart. We all remember during the last Olympics as well, when she was considered a favorite in the 53 kg weight category. She suffered a freak injury on the wrestling mat. She had to be carried away from the wrestling arena, and she was crying at that time. Was extremely heartbroken, and within 4 years, she changed the weight category from 53 to 50 because she suffered an injury prior to the Olympics, and she basically defeated and achieved the unprecedented. She defeated Yumi Sasaki, the Japanese legendary wrestler. Before this bout, the record that Yumi Sasaki enjoyed was she boasted an 82-0 kind of a record. In 82 bouts that she had contested, she had won everything. She was a multiple-time world champion, Olympic champion right, as and well. Arunil, in fact, as we speak, there is another development that is coming to fore. Vinesh Fogart was admitted to the polyclinic, is what we are given to understand, admitted to the polyclinic due to dehydration. Her situation is currently being monitored for dehydration. Arunil continues to be with us. Breaking inputs coming in, Arunil, that she's suffering from dehydration, which is why she was admitted to the polyclinic, where she is being monitored at the moment. Well, the Union Sports Minister Mansukh Mandia will be giving out a statement. A detailed statement will be expected at around 3 p.m. In the Parliament. What is the stand of the government in this? What is the stand of Indian Olympic Association? Because Vinesh Fogart is not contesting in some junior level competition. This is the pinnacle of world sports. This is the big Olympics, and she basically reached the big final. This was a gold medal bout that she was supposed to contest today, but unfortunately she's been found to be overweight by a mere 100 grams. I mean, this is a very narrowest of the margins. In fact, Vijender Singh, who was speaking to us, also said that it is an unprecedented situation that he himself has never seen in his sporting career. In contact sport, maintaining the weight within the limit that you are contesting in becomes very paramount. And Vinesh Fogart is not a newbie. I mean, she is an experienced wrestler. Like we are pointing out, that she has won everything in the wrestling arena, be it the Commonwealth Games, be it the Asian Games, World Wrestling Federation competitions as well. At the biggest competition that she was contesting, her biggest bout till now, unfortunately found to be overweight. What led to this kind of an unfortunate
situation if she was admitted in the polyclinic because she suffered from dehydration, whether any medications were given to her, was proper supervision from her team not been done, why Vijender Singh has been sensing conspiracy in this, and also saying that just because she defeated a strong Japanese opponent who was a favorite, obviously Yubi Sasaki, something of this sort has happened with her. All these questions clearly come to the fore, and it is basically questions also being raised on the support staff by some. Tetri is also with us. Tetri, you've been speaking continuously to the family members. They are devastated as well. In fact, some in the family also pointing out that there could be a conspiracy, that the government needs to look into it. What we do know is that the Prime Minister has not just posted but also spoken to PT Usha and asked the team there to look into and explore all options available. Yes, absolutely. We did speak with the family members and the villagers itself from where Vinesh belonged to, and they have raised objection, and in fact they want that the government should strictly and immediately intervene in this entire matter, because it is very concerning is what they say. And they say that Vinesh is not someone who could lose a game because of this particular matter which has come to light. And in fact they are also highlighting the particular fact that yes, they also just came to know that she is unwell and that she is hospitalized as well. If we have some time, we can speak to them about her health. आपको क्या जानकारी मिली है विनेश के हेल्थ के बारे में, उसकी सेहत के बारे में? हमको तो अभी भी पता चला है कि विनेश को हॉस्पिटलाइज किया गया है। अच्छा, हाँ। क्या कारण बताया जा रहा है? किससे बात हुई आपकी? महावीर सर ने बताया। अच्छा, क्या बात, किस कारण से हॉस्पिटलाइज किया गया, कुछ पता चला आपको? वो जी एकदम ये उसके साथ नाजायज एक तरफी किया गया, तो हर एक आदमी का शरणार्था लगता है भाई। एकदम कोई बात नहीं थी, वजन की नहीं थी और नहीं थी, बगैर टाइम वजन भी तोला गया, कुछ टाइम भी नहीं दिया, तो ये एक तरफी बात दिखती है कि अब ये मिली भगत थी। और ब्रजभूषण को ये कह रखा था ये तो चले हुए कारतूस हैं, 100 रुपए मेडल लाते हैं, तो मिनीस को भी ये सोच रखी थी कि भाई मैं इसको मेडल ला के दिखाऊंगी। उनको अब वो रिटायर भी वहां से हो लिया, मगर फिर भी उनके आदमी वहां है, सरकार है, सब कुछ हो सकता है हिंदुस्तान में। तो आपको ऐसा लग रहा है कि उन्हीं के तहत ये साजिश जो है ऐसे की गई है, ऐसा आपको लगता है? बहुत करड़ी हुई है, आगे कोई बच्चा जा भी नहीं गया, ऐसी साजिश होने लगी। तो यदि वो जाने वाली वैसे पहली महिला थी फाइनल में कुश्ती में? हाँ, पहली महिला थी, और ये तो कंफर्म हो चुका था जब वो जापान वाली लड़की हराई ना, उस टाइम पर कंफर्म हो गया था विनेश गोल्ड लेके आएगी। और हम तो गोल्ड की तैयारी कर रखी थी, यहाँ पे पटाखे पुटके सब कुछ लाके रखा हुआ था। So that's the very sad story, in fact, from the what we are hearing from the family members as well, that they are prepared, that they were very much prepared that Vinesh is going to win, because the kind of performance she had been showing continuously in the past few games, so that made them feel very much sure that she is going to win the finals, and that is how they prepared. They brought the crackers and sweets, and that is why they were waiting over here in the academy itself, just for that particular moment when Vinesh finals would have begun. And then this heartbreaking news came in, but now they are raising questions. So as to they are also leveling allegations against Brijbhushan Sharan Singh, and they are saying that it is the possibility that he could have done something, is what the family members of Vinesh Phogat says while speaking with the Times Network. They also want that the government should immediately intervene in this entire matter and should do something for Vinesh, because it was not an easy task for her to reach till the finals, because they also mentioned that she was also sitting at the protest at Jantar Mantar. From there she took out a time for the practice matches and for practice as well, for routine practice, for a regular practice, and then they only know that how she reached till the finals. And now keeping in mind all a struggle or all a fight, she should be considered, is what their demand. Back to you. Okay, Tetri, stay on with us. We'll keep coming back to you. Now, amidst reports coming in of Vinesh Phogat being admitted in polyclinic due to dehydration, more support pouring in fact, for Vinesh. Sakshi Malik has also put out a post in support of Vinesh Phogat. This is what she says. मेरा दिल घबराया हुआ है और परेशान है. विनेश ने जो किया वो कल्पना से परे. What she did, her achievement is beyond imagination. Sakshi Malik says, ये शायद इस पूरे इवेंट की सबसे विनाशकारी घटना है. What she means to say is this is
devastating not just for Vinesh Fogart, but for the entire nation. Sakshi Malik, they're offering her support to Vinesh Fogart, says if possible, if this was really possible, I would have given my medal to Vinesh Fogart. That's her tweet. She says, हम सोच भी नहीं सकते कि वो किस दौर से गुजर रही होगी. अगर ऐसा संभव होता तो मैं अपना पदक विनेश को दे देती. Support coming in from her own fraternity. The Prime Minister has put out a post supporting Vinesh, saying, come back stronger, we are all rooting for you. While there are also multiple reactions questioning why this happened. Was her weight not being monitored, checked constantly? Was she not given enough time? Multiple reactions coming in. We'll get you all of those. For the moment, a quick break.